Oh my God. Okay, Hanur. Goodbye from America. Whoa. This is your landlord. Oh my God. So a very good morning everyone. It's currently 7 a.m. in the morning and मेरी flight है around 12 p.m. तो मुझे airport निकलना पड़ेगा 9 a.m. and अभी भी I am waiting for the Samsung Galaxy S21 package जो मेरे friend का आने वाला है. Hopefully अगर 9 बजे तक मैं पिकअप कर पाता हूँ, अभी तक UPS वालों ने मुझे कॉल नहीं किया, then I'll be able to take it as well. Otherwise वो नहीं जाएगा. So packing is still in progress. मैंने iPad और ये टैबलेट निकाल के अपने हैंडबैग में डाल दिए हैं. एंड टूथब्रश चार्ज हो चुका है एंड आई एम नॉट टेकिंग द टूथब्रश चार्जर बिकॉज मैं सिर्फ उतने दिन के लिए जा रहा हूँ जितने दिन इसकी बैटरी वैसे ही चल जाएगी. एंड एज यू गाइज नो आई बिलीव इन मिनिमलिज्म एंड दिस इज माई सिंपल व्लॉगिंग सेटअप. एक पॉकेट में माइक्रोफोन जो मैं कभी कभी यूज करता हूँ व्हेन इट बिकम्स नॉइजी इन द बैकग्राउंड एंड दूसरी पॉकेट में है ट्राईपॉड, छोटा सा ट्राईपॉड. Yep, so this is all by Rode Video Micro and I'll leave the link in the description. So hey guys, once again as an introduction, I am currently a student on F1 visa and currently I have a status of OPT. So this is my EAD card and I'm going through the checklist of what I have to take and what I have to bring while coming back to the US. So currently I am taking my passport and check the F1 visa validity, which is for a couple of more months, and then OPT is valid for a couple of more months as well, and then also my I-20 which has a travel signature already. I need it even on I-20. I checked with my university. Anyways, what else I need? I-20 check. So I-20 is here, and I also need work authorization proof along with employment proof. So I need a proof that I'm employed for so and so company, which I'll print it in India because printing charges are way too high in the US. Anyways, I'm all set. So packing all this and my boarding pass is already there. And yeah, my COVID test report. Let me check if I still have it in this bag. COVID test report. Yep. So I have it. Anyways, let's go. ये यार 16-inch MacBook को ऑन होने में इतना टाइम लगता है. I just want to check battery of 16-inch MacBook and MacBook Air. I'm just taking one charger. Shoes? अच्छा 140 का हो गया हूँ मैं, पहले 138 था. 167.8 तो कितना हुआ? 27.8 pounds. अब 27.8 15 किलो से कम है. कुछ रहना गया बस. ओके मैं रह गया. इतनी क्या जल्दी हो रही है भाई? अभी 2.5 घंटे तेरी फ्लाइट में, 20 मिनट में पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट. नहीं डर लगता है टाइम पे, 3 घंटे पहले पहुंचना चाहिए. मुझे अभी टेक्स्ट आया कि माई फ्लाइट इज डिलेड बाय 30 मिनट्स और उसके बाद 5 मिनट बाद फिर टेक्स्ट आ गया कि इट इज ऑन टाइम. अजीब है यार, यूनाइटेड बहुत तंग करती है. डोमेस्टिक टर्मिनल नॉर्थ वो था, साउथ पार्किंग नॉर्थ पार्किंग में आ गया. शिट, मैंने वही तुझे कहा ना नॉर्थ में जाना था. इतने कंफ्यूजिंग साइंस है. राइट जाना था यार. डोमेस्टिक टर्मिनल राइट जाना था. हाँ, नेविगेशन बता रहा है. दिक्कत ये है, अटलांटा इज वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट एंड वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड. या सो अब तो नॉर्थ साउथ में बहुत गड़बड़ कर दी यार. शिट, हम साउथ में आ गए. इतनी लंबी लाइन. हाँ, ये पूरा साउथ इज इंटायरली डेल्टा एंड नॉर्थ इज मतलब बाकी सारी एयरलाइंस होती हैं वो डेल्टा का बोर्ड. नाउ इट्स 10 AM. मेरी ऑफिस की मीटिंग भी स्टार्ट होने वाली है. एनीवेज, होपफुली मैं 10 मिनट तक शायद पहुंच जाऊं. 2 बार मिस हो गया. इतने गंदे साइंस है यहाँ पे. यही इनिशियल वाला अपन ने छोड़ा था. हाँ, यही मिस हो गया था. ये मैं चलता हूँ. थैंक्स यार, बाय. Is it possible to change seats? Can you check? Go. इतना खाली सिक्योरिटी चेक मैंने कभी नहीं देखा. So मेरा गेट नंबर है T17 एंड प्लेन में बैठने की अलग ही एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कभी बैठा ही नहीं हो. It's been more than 1.5 years.
going to attend my office meeting and luckily हर seat पे outlets हैं. And I did a huge mistake. I forgot my noise cancellation headphones और ये earphones बहुत ही ज़्यादा घटिया हैं. मेरे कान दर्द होते हैं कि वॉल्यूम बढ़ानी पड़ती है. Thank you. And flights were so full कि उन्होंने मुझे कहा कि if I change my ticket right now, they will let me do it for free and in return give me a voucher of $200 to $500. Thank you. So now I'm currently running to the InMotion Tech Store. वो बेस्ट बाय की तरह एक स्टोर है. वहाँ पे मैं चेक करूँगा अपने फ्रेंड के Samsung Galaxy S21 का प्राइस. So there's tax here. So it's you accept Apple Pay, right? Yeah. Okay. $330.74. 330? But There's tax here. so I thought it's 229. $290 $299. for the pros. This is your regular one. This is $189. Yeah. There's bundles here. That's if you want the portable charger in a carabiner case. This becomes $329. That one corresponding is $209. Those guys. So that's Okay. part of the little bundle. Wait, so if I get this whole bundle, this will be $329. And I'm already paying $330. And this That's is before taxes. okay. I'll just take it. Thank you. So reach Chicago airport and this is probably biggest airport of all times. मुझे लगता है कि Atlanta airport से भी बड़ा लगता है because it's so crowded and even more packed. And I just bought AirPods Pro. मैंने कभी यूज़ नहीं किए and मजबूरी में लेने पड़े because I've left my noise cancellation headphones. 3614 to Atlanta. We request all the passengers to please proceed. C5 for immediate boarding. Thank you. And things are so overpriced here. मतलब Walmart पे मुझे $200 के सेल में मिल सकते थे, but I got these for $330 after taxes. That's insane. And also please check out the website called chi.gov.eto. So इस website पे details है about the quarantine rule, कि how much time you should quarantine, and ये भी mention करता है कि to which states you should avoid travel, जहाँ पे आके आपको क्वारंटीन अप टू 10 days करना पड़ सकता है. So now it's around 3:30 p.m. in the afternoon and the airport is completely empty. I'm looking for some healthy food options here, but ढूंढना बहुत मुश्किल है, so मुझे E-terminal जाना पड़ेगा. So it was about 12 minutes away. Follow the main walkway, and you're going to Terminal 1, and you go through that narrow walkway. Take care, thanks. Yellow sticker as you board. Just your passport and your boarding pass with a yellow sticker. So basically there are 3 requirements to board. Number 1, self declaration form, जो QR code से मैंने स्कैन किया, अभी भरा नहीं है, भर रहा हूँ. Number 2, COVID test negative and passport. That's it. पूरी एयरलाइन फिल्टअप है. मेरी सीट लास्ट मोमेंट पे चेंज की है उन्होंने और विंडोज से आई. एंड यू गाइस विल नॉट बिलीव कि उन्होंने ये तक चेक किया कि आपकी टेस्ट रिपोर्ट में RT लिखा है कि नहीं. एंड दे वर डिनाइंग एंट्री to those who didn't have RT written in the PCR test report. And there was a doctor with me और वो समझा भी रहे थे यार इक्को तरह की PCR होती है, मतलब एक ही तरह की PCR होती है, that is RT-PCR जो US में चल रही है. वो समझ नहीं रहे थे, फिर फ़ोन पे बात कराई. मेरे पास लकीली 2 टेस्ट रिपोर्ट्स थी, एक में RT-PCR लिखा था तो वही चल पड़ी. मैं सिर्फ इनकी वजह से सो पाया.
यहाँ से जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा, आई स्टेड इन दिल्ली फॉर 1 night and missed my flight the next morning to Amritsar and then rebooked, paid 4,000 rupees and then caught my flight at 1 PM. एक चीज निकाल दी. Oh my god, such a huge line for launch. कमाल है, लॉन्च में भी वाईफाई की स्पीड सिर्फ 1/2 Mbps आ रही है. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा एयरटेल का सिम है Pixel 4a में, वो डीएक्टिवेट हो चुका है बिकॉज इट वाज आउट ऑफ इंडिया फॉर मोर देन 1 years. एंड इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है टू यूज़ वाईफाई बिकॉज जो मेरा यूएस के सिम है उसमें OTP आ ही नहीं रहा. मैंने 3 बार ट्राई किया, इवन इन द लॉन्च वाईफाई और इन द दिल्ली एयरपोर्ट वाईफाई, किसी वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, OTP ही नहीं आ रहा मेरे यूएस सिम में. सो दैट्स वाई मुझे घर फ़ोन करना पड़ा, अपना T-Mobile का सिम रोमिंग पे डेटा यूज़ करना पड़ा. और डेटा के चार्जेस मुझे पता नहीं, शायद $1 फॉर 1 GB मिल रहे हैं. मतलब सस्ता ही, ज़्यादा महंगा नहीं है T-Mobile पे, बट इट्स स्टिल एक्सपेंसिव. सो इस कारण इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू यूज़ वाईफाई एंड स्पीड अभी बहुत ज़्यादा कम है. 1 सेकंड के लैपटॉप बंद हुआ और फिर से बंद हो गया. अब दोबारा से नया OTP जनरेट करना पड़ेगा, नानी का नंबर या फिर किसी और का नंबर डालना पड़ेगा. सो गॉट अ शील्ड एंड अ मास्क. मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए नहीं मिली पर डोमेस्टिक के लिए मिल गई. Thank you so much. Wow. लो जी. लो जी. दंद चले गए. दंद कोई नहीं, ठीक करने दिते आ जाएंगे, चिंता ना कर. So now finally time to give the gifts. मैं आ गया बस. ਇਹ ਮਾਸੀ ਨੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ.